Now, in a rapid turn of events, Pakistan Prime Minister Imran Khan has asked the President to dissolve the National Assembly and announce fresh polls after the last-minute dismissal of the no trust motion. Here's more on this story on ground. जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम को बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ. Dramatic twist in Pakistan's political power game. Chaos breaks out after Imran Khan's bouncer. Pakistan Prime Minister losing numbers, staring at certain defeat and ouster from power. Decided to cling on to power via back door. Imran dramatically called for dissolution of parliament and fresh polls. Moments after the speaker dropped a bombshell and rejected the no trust motion. 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ. Imran Khan called for fresh elections after no confidence motion against him was rejected in the National Assembly. अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है. 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था. ये इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी. मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि नेशनल असेंबली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया एक वो मूव रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में. एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ. तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें. एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है. Before Imran-backed Deputy Speaker Qasim Suri nullified the motion and termed it against the Constitution. We're at the Parliament right now and the opposition is holding its own session after the Deputy Speaker adjourned the session till an indefinite period and rejected the no trust motion against Prime Minister Imran Khan. The opposition held voting on the no trust motion during this session of its own and the no trust motion has passed with 195 members voting in favor of it. This is of course not official because this is just an informal session of the opposition and we are waiting to hear from them about the future strategy that they're going to adopt. The Prime Minister's close aide and INB Minister Fawad Chaudhry cried foul play and claimed foreign conspiracy to topple the government. 7 मार्च को यह बताया जाता है अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती. 8 मार्च को आती है. इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आए. हमारे एसपी साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है. एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर regime change का by a foreign government. Khan sent a proposal to President Arif Alvi to dissolve the assembly, essentially making way for early elections to be held in Pakistan. The president soon obliged. After the unexpected move in the National Assembly, opposition staged protest inside the House, conducted its own session, staying adamant on ousting Imran. A jubilant PTI tweeted images of a smug Imran Khan in all smiles after the trust vote stunner. Imran has decided to stay on as the Prime Minister in a caretaker role before polls. The opposition says it is just a facade to destroy democracy and stay on in power despite lacking numbers. Who will have the last laugh in the Pakistan political quagmire? With Alia Zehra in Islamabad, Bureau Report, India Today.
Now, the opposition created quite some ruckus in the Pakistani assembly after the speaker rejected a no-confidence motion against Imran Khan. Leaders of the opposition call this move as unconstitutional. Pakistan minister, meanwhile, has announced that fresh elections will take place in 90 days' time. Here's what's that transpired. पहुंच रहे हैं शाहिद खकार अब्बासी को हम देख सकते हैं, खुरम दस्तगीर है जिनको हम देख सकते हैं। Unruly scenes in Pakistan's National Assembly after the speaker rejected the no-confidence motion against Prime Minister Imran Khan. Fuming opposition first created a ruckus and then started its own proceedings in the National Assembly, even after the power supply was snapped. Opposition अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई चलाई जा रही है। We have been told that the lights have been, the power has been deliberately switched off by the assembly officials, because they are saying that the opposition cannot be allowed to have their own session, and the time is over for the session. मौजूद रहे और अयाज सादिक ने Pakistan Muslim League Nawaz leader Ayaz Sadiq took the speaker's chair and presided opposition's meeting. तहरीक पर कार्रवाई चलाई जा रही है। अजहर फारूक से जानते हैं कि Votes of opposition members were counted and a total of 195 MPs were found to be present. Security was beefed up outside the parliament after the whole episode. Members of the opposition also came down heavily on Imran Khan and called the move an open violation of the constitution, accusing Imran of pushing Pakistan into civil war. Article 6 लगेगा। Article 6 किसके ऊपर लगेगा? Article 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। आज ये नजराते हुए आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है, पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए। Nawaz Sharif's daughter Maryam Nawaz took a jibe at Imran and said, if this insane and fanatical person is not punished for this crime, the law of the jungle will prevail in the country after today. PPP leader Asif Zardari called the move illegal. Another PPP leader, Sherry Rahman, said minority prime minister can't dissolve the assembly. The opposition joining forces to fight Imran. Who will prevail finally? Bureau Report, India Today. Now, Imran Khan mocks the opposition after cancellation of the no trust motion. Imran has said that his actions have surprised the opposition, says the opposition did not see that coming, and reiterated foreign conspiracy claim during his address after the National Assembly of Pakistan was dissolved. Here's a look. मैं पहले तो कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया
हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के, कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बाकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? देखिए, हेड्स ऑफ कई दफ़ा बात पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। All right, the dissolution of the National Assembly in Pakistan has now prompted opposition leaders to head to the Supreme Court. A 3-member bench of the Supreme Court of Pakistan heard the suo motu notice following the constitutional situation. In fact, the Supreme Court adjourned further hearing until tomorrow. Notice has been issued to the Attorney General for hearing. Supreme Court has restrained state officials from taking any unconstitutional action. Chief Justice of Pakistan, Supreme Court, has said that all political parties should ensure peace and order, and that it is Ramadan and everyone's fasting at the moment. सबसे पहला नुक्ता तो यही है कि आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग को जज कर सके, और ये स्पीकर का एब्सोल्यूट इख्तियार है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के अपने बहुत सारे फैसले जो हैं वो मौजूद हैं कि जो एविडेंस है, अब डिटेल्ड रूलिंग जो है वो स्पीकर साहब ने दे दी है, बहुत सारे आपके मीडिया के दोस्तों को पहुंच भी गई है। उस रूलिंग में उन्होंने बड़ी डिटेल्ड में रीजंस लिखे हैं कि कैसे आर्टिकल 5 जो है वो अट्रैक्ट होता है उनकी नज़र में। Now, the move to dissolve the National Assembly might have saved Imran Khan's government momentarily, but really has further damaged the prospects, and it's really fractured this democratic system in Pakistan, which already was. Here's what that transpired over the day. Solidly held there. Oh, that's a big shot. Oh, he's bowled him. One of Pakistan's greatest all-rounders of all time. A bowler par excellence who was considered unplayable when ball tampering was legal in the 80s. And the first wicket down, Imran Khan, the great Pakistan all-rounder. 30 years after he retired from the cricket pitch, Imran Khan Niazi has demonstrated that his talents for tampering to swing things in his favour have lost none of their potency. He may be beaming now, exuding the delight of one who has pulled the rug from under Shehbaz Sharif and Bilawal Bhutto, who led an opposition army to cast Imran unceremoniously out of office. But Imran has landed his country in a constitutional crisis. For one thing, Imran Khan appears to have made a move that flies against the mood in the all-powerful Pakistan army. Averting his ouster just a day after Pakistan's army chief obliquely criticized Imran's foreign hand conspiracy theories. वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं। We share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other.
आर्टिकल 5 जो है उसकी क्लॉज 1 तो पड़ी. By blocking a constitutionally moved no trust vote against him, Imran has also confirmed to the Pakistani people that the numbers were indeed stacked against him and therefore severely damaged the democratic process at a time when Pakistan is battling to repair an irreparable international reputation. The opposition may be pushing things when it cites a looming civil war, but as caretaker Prime Minister on the back foot, Imran Khan still faces unrest and opposition even from his own party and government. A possible revolt within was triggered shortly after the National Assembly drama, with Imran's Attorney General and Deputy, the two top Pakistani legal officers, resigning. आर्टिकल 6 लगेगा. आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर. Imran Khan famously lost his cap and nerve facing a bouncer playing for Sussex in 1981, a sporting assault that galvanized him to bounce back and demolish the rival Middlesex team on the final day of that famous county test. That has gone miles. It is a huge 6. 41 years later, it's Imran who has delivered the bouncer. And it remains to be seen if Pakistan can put him in his place. Bureau Report, India Today.